अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट एरर्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। तो एरर्स जो है इसको हम कहते हैं जनरली मिस्टेक्स या फिर करेक्शंस या फिर हम डिफरेंसेस भी इसको कह सकते हैं। अगर हम एरर्स को देखें तो एरर्स को हम जनरली डिफाइन करते हैं एज एरर्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आर द डिफरेंसेस बिटवीन द ट्रू रिजल्ट एंड द मेजर रिजल्ट, या फिर हम इसको डिफाइन करते हैं एज discrepancies यानी differences between the observed or measured value and the true or intended value of a parameter। इस वीडियो में हम इन डिटेल पढ़ेंगे sources of errors, types of errors, methods of minimizing errors in pharmaceutical analysis। तो फर्स्टली हम बात करते हैं about sources of errors in pharmaceutical analysis। सोर्सेज ऑफ एरर्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, इसमें हम कहते हैं कि वेरियस सोर्सेज ऑफ एरर्स कैन कंट्रीब्यूट टू इनएक्यूरेसीज इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। ये एरर्स जो है दे कैन ऑकर एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ एनालिटिकल प्रोसेस। अब हम जो ये सोर्सेज ऑफ एरर्स है इनको हम पहले समराइज करके देखते हैं कि इसमें हमें क्या क्या आता है। फर्स्टली अगर हम देखें तो इसमें सैम्पलिंग एरर, प्री एनालिटिकल एरर्स, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एरर्स, मेथोडोलॉजिकल एरर्स, ह्यूमन एरर्स एंड इन्वायरमेंटल कंडीशंस आती है जिनकी वजह से सोर्सेज ऑफ एरर्स क्रिएट होते हैं। सो फर्स्टली अगर हम देखें सैम्पलिंग एरर में हम कहते हैं कि इनएडिक्वेट या नॉन रिप्रेजेंटेटिव सैम्पलिंग की वजह से एरर पैदा हो सकता है। इसी तरह से इसमें हम कहते हैं कि कंटामिनेशंस ड्यूरिंग सैंपल कलेक्शन, सैंपल हैंडलिंग और स्टोरेज कैन इंट्रोड्यूस एरर्स। सेकंड इसमें हमें आता है प्री एनालिटिकल एरर या एरर्स, जिसमें हम कहते हैं कि एरर्स इन सैंपल प्रिपरेशन सच एज इनकम्प्लीट डिसोल्यूशन, इम्प्रॉपर एक्सट्रैक्शन और इनकम्प्लीट डेरिवेटाइजेशन कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ द रिजल्ट्स। इंटरफेरेंस from the matrix in the sample can impact the analytical signal and may bias results if not properly addressed। उसके बाद इसमें हमें आता है एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंटेशन एरर्स, जिसमें पहले आता है कैलिब्रेशन एरर, जिसमें हम कहते हैं कि इनकरेक्ट कैलिब्रेशन ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट्स कैन लीड टू सिस्टमैटिक एरर्स। सेकंड इसमें आता है इंस्ट्रूमेंट ड्रिफ्ट, जिसमें हम कहते हैं चेंज इन द परफॉर्मेंस ऑफ एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट ओवर टाइम कैन इंट्रोड्यूस एरर्स। इसी तरह से इसमें थर्ड आता है सेंसिटिविटी एंड लीनियरिटी इश्यूज, जिसमें हम कहते हैं डिविएशंस फ्रॉम द लीनियर रेस्पॉन्स और चेंज इन द सेंसिटिविटी कैन अफेक्ट द एक्यूरेसी ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। उसके बाद इसमें हमें आता है मेथोडोलॉजिकल एरर्स। मेथोडोलॉजिकल एरर्स में हम कहते हैं कि फेलियर टू प्रॉपरली वैलिडेट एनालिटिकल मेथड्स कैन लीड टू इनएक्यूरेसीज एंड प्रेजेंस ऑफ इम्प्योरिटीज इन सैंपल और रिएजेंट्स कैन इंट्रोड्यूस एरर्स। उसके बाद इसमें हमें आता है ह्यूमन एरर्स। तो ह्यूमन एरर्स में हम कहते हैं कि inconsistencies in skills and techniques of different operators can contribute to errors, and we say error in recording or entering data can lead to inaccuracies। लास्ट इसमें हमें आता है environmental conditions, जिसकी वजह से sources of errors create होते हैं। तो इसमें हम कहते हैं कि fluctuations in environmental conditions such as temperature and humidity can affect the stability of sample and reagent leading to errors। नेक्स्ट इसमें हमें अब आता है टाइप्स ऑफ एरर्स, जिसमें सबसे पहले हमें आता है सिस्टमैटिक एरर्स और डिटरमिनेट एरर्स, इन विच वी से दिस टाइप ऑफ एरर लीड्स टू a consistent overestimation or underestimation of results. It may be caused by instrumental drift, calibration issues or methodological flaws. The degree of error is proportional to the concentration of the analyte. This could be due to matrix effects, instrument non-linearity or calibration problems. Second इसमें हमें आता है random errors. Random errors को हम indeterminate errors भी कहते हैं, in which we say these errors result in variations in
repeated in measurements of the same sample under identical conditions. Factors such as instrumental noise, operation variability, and random fluctuations can contribute to imprecise results. Fluctuations in environmental conditions such as temperature, humidity, and air pressure can introduce random errors if not controlled. In addition to these types of errors में हम और भी कहते हैं जैसे ब्लंडर्स रैंडम एरर इन्वायरमेंटल एंड ऑब्जर्वेशनल एंड सिस्टमैटिक एरर यानी तीन में हम इसको डिवाइड करते हैं फिर सिस्टमैटिक को और फर्दर डिवाइड करते हैं इनटू इन्वायरमेंटल ऑब्जर्वेशनल इंस्ट्रूमेंटल एंड थ्योरेटिकल एरर्स लाइक सिस्टमैटिक में ये एग्जांपल है रैंडम एरर में ये एग्जांपल है और ब्लंडर में ये एग्जांपल्स है ये आप इसमें खुद भी देख सकते हैं यह मैंने आपको इन एडिशन बोला था नाउ लेट्स सी द मेथड्स ऑफ मिनिमाइजिंग एरर्स in which we say minimizing errors in pharmaceutical analysis is crucial to ensure the accuracy and reliability of results. यहाँ हम कुछ methods की बात करेंगे. Here are some methods to achieve this. First method is calibration and standardization. Then quality control checks, proper training and documentation, instrument maintenance, validation of analytical methods, sample handling and preparation, use of internal standards, data review and verification, environmental control, risk assessment, regular audits and inspections, continuous improvement. First, let us see calibration and standardization, in which we say regular calibrate and standardize analytical instruments to ensure accuracy. क्वालिटी कंट्रोल एंड चेक्स में हम कहते हैं implement a robust quality control system to monitor and verify the performance of analytical methods, which include positive and negative controls in each analysis to identify the correct errors. Proper training and documentations में हम कहते हैं train analysts thoroughly on standard operating procedures SOPs and ensure documentation is comprehensive. Maintain detailed records of all procedures, equipment, and results. Instrument maintenance. Instrument maintenance में हम कहते हैं conduct routine maintenance of analytical instruments to prevent malfunctions and inaccuracies. Follow manufacturer guidelines for calibration and maintenance. Validation of analytical methods, in which we say consider parameters such as specificity, accuracy, precision, linearity, and robustness during validation. Sample handling and preparation, in which we say develop and adhere to proper sample handling protocols to prevent contamination. Use of internal standards, in which we say incorporate internal standards into analytical methods to correct for variations in sample preparation and instrument response. Data review and verification, जिसमें हम कहते हैं implement a system for reviewing and verifying data by a second and qualified analyst. Use electronic data system with audit trials for data integrity. Environmental control, in which we say control and monitor environmental conditions such as temperature and humidity to minimize variations in results. Risk assessment, in which we say conduct risk assessment to identify potential sources of errors and implement measures to mitigate these risks. Regular audits and inspections, in which we say conduct regular internal and external audits to ensure compliance with regulatory requirements and industry standards. Continuous improvement, in which we say establish a culture of continuous improvement, encouraging feedback and implementing corrective and preventive actions. By implementing these methods, pharmaceutical laboratories can enhance the accuracy, precision, and reliability of their analytical results
ultimately ensuring the quality and safety of pharmaceutical products.